हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि नेट गेट जेस्ट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन है कि यू हैव बीन गिवन अ वेक्टर पोटेंशियल दैट इज ए इक्वल टू ए वाई स्क्वायर एक्स कैप। यू नीड टू फाइंड द करंट डेंसिटी एंड द चार्ज डेंसिटी इन द रीजन। क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगेगा ये तो बहुत ही क्या क्वेश्चन पूछ लिया, करंट डेंसिटी निकालना है, चार्ज डेंसिटी निकालना है, लेकिन वेक्टर पोटेंशियल दे रखा है। लेकिन अगर हम इसको सिंपली सोचें, इफ यू हैव अ वेक्टर पोटेंशियल, तो वेक्टर पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया तो फिर करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। तो आपको दो रिलेशन में बताता हूं जिनसे आप फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे अगर आपको वेक्टर पोटेंशियल ए आपको दे रखा है और स्केलर पोटेंशियल लेट्स सपोज फाई आपको दे रखा है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर आप लिख सकते हैं, दिस इज द कर्ल ऑफ द vector potential A, and then if you want to find the electric field E, it is the negative of gradient of the scalar potential phi minus del A over del T. Okay, now if you see these two equations, equation number 1 for the magnetic field and equation number 2 for the electric field, you know the magnetic field and electric field because if you know the potential, vector potential and the scalar potential, you can easily find these two fields. And if you know these fields, we can use the Maxwell equations. Maxwell equations क्या होती हैं? हम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यूज करेंगे चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन यूज करेंगे हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या होती है? इट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू रो। रो इज द चार्ज डेंसिटी हियर। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ लेट्स सी द फोर्थ इक्वेशन। इट इज द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी का कर्ल क्या होता है? इट इज द करंट डेंसिटी J. So from the fourth equation we can find the J if we know the curl of B. So let me write the steps first. First step is we will use the equation 1 and 2. These two equations will give you the magnetic field and the electric field. Then we will use the equation number 3 and 4, and using these equations we can find the charge density and the current density. Let me use the first equation. So you have been given the vector potential A, that is A y square x cap. So if you find the curl of B, if you use the first equation, so you will say that the B will be curl of A. And then if you use the fourth equation, then you will say that the curl of B is equals to J. I can substitute the B from this curl of A equation, and then you will say that the current density J is equal to curl of B. In this equation, we can use a vector identity. So using the vector identity, you will get it is equal to negative of del square B plus del of del dot B. Sorry, I should write it as A because this is, I'm substituting B as curl of A, so it will be A here. Again, A here, and similarly A here. Now, let's see the equation carefully. You have been given the vector potential A as A y square x cap. So that means if you find the divergence of A, it will be what? Divergence A is only along the x direction. So the del over del x operator will give you that quantity. So this is del over del x of A y square. And as this function is only a function of y, so the derivative with respect to x, partial derivative with respect to x will be 0. That means you can say in the current density equation, the second term will go to 0. It is vanishing. So you are having now the current density as negative of del square A. Let's write the del operator first. So the del square operator will be del 2 over del x square plus del 2 over del y square plus del 2 over del g square. And then you are multiplying it with the vector potential A, that is A y square x cap. इसको मल्टीप्लाई करते हैं अभी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको 0 देगा बिकॉज
You are taking the partial derivative with respect to x square, so this will not give you a finite value. Similarly, if you take the partial derivative with respect to g square, it will also be 0. So only आपका ये जो second term है del 2 over del y square, it will be finite. So let's find it. So it is equal to negative of del 2 over del y square a y square, and the direction will be x cap. And if you take the double derivative of this expression, you will get negative 2a, that is on x cap. So this is our current density in the region. Similarly, let's find the charge density. For charge density, we need to find the electric field first. So how to find the electric field? Electric field is negative of del phi minus del A over del T. As you have not been given the scalar potential, हमें scalar potential नहीं पता है, तो ये वाला first term हमारा फिर से 0 हो जाएगा, vanish होगा. And also, if you see the vector potential, it is a y square x cap. That means our vector potential is independent of the time. Again, this second term will also vanish. So you can say that the electric field in the region is 0. So electric field is 0. So let's find what is the charge density. Charge density is divergence of the electric field. As electric field is 0, so you can say the charge density will also be 0. So now we have obtained both our expressions, that the charge density is 0 in the region and the current density is negative 2a x cap. That's all from this side. Thank you for watching this video. If you like this video, please like it.